I hope everyone has gone through the videos which have been posted up till now and you are clear with the basics of SQL. The statements which we have done up till now are select, insert, update, delete, drop, alter, and some clauses which we have used with select statement are where clause and order by clause. Now moving further with some more clauses which we are going to learn which can be used by the select statement, that is advanced SQL queries. Now suppose the records which are given to you are these records. Roll numbers are there, name are there, and the addresses. But in the address field you can see, the addresses are repeated. The एड्रेसेस कौन कौन से एड्रेस रिपीट हो रहे हैं? यहाँ पर एड्रेसेस रिपीट हो रहे हैं, दैट इज वलसाड, वापी, सेल्वास. All these addresses are repeated. Selvas is not there, but still. So Valsad is repeated, Surat is repeated, and Vapi, Daman, Navsari, everything. These are repeated. So can't it be done that we can form some small groups from this data? तो डेटा में से जो रिपीटेड वैल्यूज हैं वो वैल्यूज को हम सब एक साथ रख सकते हैं. तो दिस कैन बी डन. सो दमन की वैल्यूज सारी एक साथ आ गई, नवसारी की एक साथ आ गई, सिलवास की एक वैल्यू है वो एक साथ हो गई, एक सूरत की वैल्यू है, वलसाड एंड वापी, ये सारी वैल्यूज एक साथ हो गई. तो हमने क्या किया, बड़ा ये जो डेटा था, यहाँ पर डेटा बहुत बड़ा है, सारे डेटा जो हैं उनको हमने क्या कर दिया, सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ग्रुपिंग कर दिया. कैसे ग्रुपिंग किया, ये दमन की ग्रुप कर दी हमने, ये नवसारी की एक ग्रुप बना दी, सेल्वास इंडिविजुअल है तो सेल्वास का एक ही वैल्यू बनेगा. देन सूरत की ग्रुपिंग हमने कर दी यहाँ पर, देन वलसाड की ग्रुपिंग एंड फाइनली वापी की ग्रुपिंग. तो ये चीज क्या हो गई, हमने एक बड़े डेटा में से, यहाँ पर ये जो बड़ा सा डेटा वैल्यूज थी उनमें से हमने क्या किया, ये सब ग्रुपिंग कर दी. तो यही चीज हम डिस्प्ले करते टाइम भी रिकॉर्ड्स के सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ ये ग्रुपिंग कर सकते हैं. और इन ग्रुपिंग को करने के लिए कौन सा क्लॉज हमको यूज करना है, हमको यूज करना है ग्रुप बाय क्लॉज. We have to use group by clause. A grouping query groups row based on common values in a set of grouping columns. So ये क्या करता है ग्रुप बाय क्लॉज, जो वैल्यूज सेम है उन पर क्या क्रिएट कर सकते हैं, हम ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं. Rows with the same values for the grouping columns are placed in distinct groups. Each group is treated as a single row in the query result. Now remember, when you are working with group by clause, when you are forming the groups, this individual thing, this is a single one first group, this is your second group, this is your third group. Means what, now the records which are included in this group will be considered as single record. So this individual group will be considered as a single record. A grouping query groups rows based on distinct values that exist in specified column. It creates set containing several records grouped together based on the condition. So here the condition is what, belonging to same address. तो हमने ग्रुपिंग किस पे करी है, एड्रेस कॉलम के ऊपर ग्रुपिंग किसकी करी है, ये सारे डेटा की ग्रुपिंग हमने किसके ऊपर करी है, एड्रेस कॉलम के ऊपर करी है. Fine. So now which clause will be used? The clause which is used to form the groups is group by clause. And group by clause is used with which statement? Select statement. So the syntax will be select columns from table name, group by column names. Now if you want to form groups, but the groups must be formed on the specific records only. जो रिकॉर्ड्स की फिल्टरिंग करनी है आपको ग्रुप्स के अंदर, वो ग्रुप्स फॉर्म करने से पहले भी आपको क्या करना है, रिकॉर्ड की फिल्टरिंग करनी है. तो आप कौन सा क्लॉज यूज कर सकते हो, देन इन दैट केस यू कैन यूज वेयर क्लॉज. तो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी आप डेटा सिलेक्ट कर रहे हो वो डेटा फिल्टर होगा कौन से क्लॉज के साथ, वेयर क्लॉज के साथ. एंड फाइनली जो आपको रिकॉर्ड्स मिलेंगे उसके ऊपर आप क्या करोगे, ग्रुप बाय करोगे कॉलम्स के ऊपर.
रिमेंबर। तो ऑर्डरिंग क्या है, पहले कौन सा क्लॉज आएगा, वेयर क्लॉज आएगा एंड बाद में ग्रुप बाय क्लॉज आएगा। Remember and keep in mind, if you don't want to filter the records, then you don't have to use the where clause. If you only want to form the groups, then you can just use group by clause. लेकिन अगर आपको पहले filtering data specific records ही चाहिए, in this case suppose मुझे सिर्फ दमन एंड वापी का ही records चाहिए और उनकी ही grouping करनी है, तो मैं क्या करूँगी, where address is equals to दमन and address equals to वापी, वो रिकॉर्ड्स हमें मिल गए और उसके बाद मैं ग्रुपिंग फॉर्म करूंगी, तो मैं क्या यूज करूंगी, वेयर क्लॉज भी यूज करूंगी एंड ग्रुप बाय क्लॉज भी यूज करूंगी। सो ग्रुप बाय क्लॉज ऑपरेट्स ऑन द रोज फ्रॉम क्लॉज एज फिल्टर्ड बाय द वेयर क्लॉज। Now here what we are doing, count the number of students coming from various cities. Now what I have to do, I have to count the number of students coming from each city. So what I will be writing, select address count name as number of students from student group by address. each city बोला है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप बाय एड्रेस कर रहे हैं। एंड हमें आप स्टूडेंट्स के नंबर चाहिए, तो हम क्या यूज कर रहे हैं, एक फंक्शन यूज कर रहे हैं, कौन सा फंक्शन, काउंट फंक्शन यूज कर रहे हैं। अब आपको ध्यान में ये बात रखनी है, जब आप ग्रुप बाय क्लॉज यूज करते हो, ग्रुप बाय किस पर आप कर सकते हो, कॉलम के ऊपर कर सकते हो, क्योंकि कॉलम के अंदर ही वैल्यूज होती हैं। तो ग्रुप बाय के साथ जो आप कॉलम स्पेसिफाई कर सकते हो, वही कॉलम आपका सिलेक्ट में आना चाहिए और इसके अलावा कोई भी कॉलम आप सिलेक्ट में नहीं ले सकते हो। अगर आपको ग्रुप बाय कॉलम के अलावा कोई भी कॉलम लेना है सिलेक्ट के साथ, तो वो आपको एग्रीगेट फंक्शन के साथ ही लेना पड़ेगा। बिना एग्रीगेट के आप कोई भी कॉलम को आप यूज नहीं कर सकते हो सिलेक्ट के साथ। रिमेंबर दिस थिंग, keep it in your mind, it is a rule of thumb that if you are using group by clause, then no other column can be specified with the select statement apart from the column which is used by group by clause. If you want to use some other column, then you can use that column only with the aggregate function. And aggregate function, it is pending, I will teach you the aggregate functions also, but remember, if you want to use other than column, apart from column which is used by group by clause, then you can use it